Speak up, piscine. Speak up, please. Speak. Piscine. Yes, speak up. Un piscine. Speak up. Un. Speak up. Un piscine. Okay. Say Claire, etc. Say Claire. Claire. Ankit, I can't see the board. Oh, sorry. Is it fine now? Is it fine now? Yes, yes, thank you. All right. Now, there will be a Sohail dialogue. Sohail will say, perfect, speak up, perfect. Perfect. Speak up, perfect, speak up. Perfect. Perfect, speak up, perfect. Speak up, please. Perfect, speak up, perfect. Je suis très content. Speak up, je suis très content de service. Je suis très content. Speak up, je suis très. Je suis très. Speak up. Je suis très content. 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 Speak up. Je suis très content. Content is basically happy. I am very happy, as I've already explained to you. In case of afraid, I have to use our verb. In case of afraid, I have to use. In case of happy, I have to use actual verb. J'ai peur. Speak up. J'ai peur. Kada tumne j'ai peur, I got afraid. J'ai peur. We have done na j'ai peur. And in case if I am happy, je suis très content. Speak up. Je suis très content de service. Je suis très content des services. Say Claire, tell me yes and no. Now Sohail will say. Contented को क्या कहेंगे? Contented in terms of. I'm contented with this. I'm satisfied. Others. अगर आप कह लो कि je suis très satisfied, you can je suis très satisfied, or either you can say je suis heureuse. Heureuse. Heureuse, basically happy. Heureuse is content is okay. Heureuse is something like you are deeply satisfied with the service. Delighted. Delighted, yes. So you say delighted, so that is heureuse. Or if you say, I am literally translated, je suis satisfied, but that is normal. But je suis heureuse. Say Claire, heureuse. So, perfect. Perfect, yes, perfect. Perfect. Je suis très content. Speak up. Je suis très content de service. Merci mille fois. Merci. Thank you so much. Thank you because you are new. So you have to use the body language. The moment you will do a theater, you have to use the body language. Merci mille fois. Don't use the merci mille fois. No, because you have to. Because in Hindi. Aji, thank you so much. Thank you so much. You helped me a lot. Just we try content the service. Merci mille fois. Speak up. Merci. Aapko, you have to use your body language. Say Claire. Merci mille fois. Say Claire. Merci. Speak up. Merci. Mille fois. Say Claire. Okay. Now you will ask Gitanjali. We pose votre question again. You will say okay. You can ask a question. That's no problem. You say okay. Gitanjali will say okay. Why? Yes. Posez votre question. Posez is my verb to ask. Poser is my verb to ask. But she's saying, posez votre question. Posez votre question. C'est clair. Vital is saying, okay, read that. C'est bien. Posez votre question. C'est bien. Posez votre question. You ask your question. Now, again, so I will say, मैं आपको यहाँ से कल 7 o'clock से कराऊँ, ठीक है? Now, so I will say, quels sont les moyens de transport? Quels sont les
Quels sont? What are the means of the transport over here? Quels sont? Quels sont? Speak up. Quels sont? Speak after me. Quels sont? Speak up. Quels sont? Speak up. Quels sont les moyens de transport? Say clair. Tell me yes or no. Claire. Now someone is asking, okay, dites-moi, or quels sont les moyens de transport? Say clair. Clair? Now what Gitani will say? She will say, ici, il y a des autobus. Il y a, ici, here, speak up, ici, here, il y a, there is, il y a, speak up, ici, speak after me, ici, il y a des autobus, il y a des autobus. Ici, il y a des autobus, speak up, il y a des autobus, des métros, etc. Il y a des autobus, des métros, etc. C'est clair. C'est clair? Il n'y a pas beaucoup de circulation. Now, il n'y a pas, मेरा face. Speak after me. Il n'y a pas, speak up. Il n'y a pas. अब आपको पता लगेगा कि हमने जो कल किया था परसों. We have done E and O. आपने परसों वाला क्लास टाइम लिया था? E and O वाला. E and O आपको बुलाया था? E and O. We have done. Yes. Saturday we have done, right? Yes. Saturday we have done. Il n'y a pas, ni, there. We have done. Yes. E there. Say clair. We will not use laba. Laba is over there. We will use E. I'm going to cinema. Je vais au cinéma. I'm going there. J'y vais. I am going to the cinema. I am going. Literal translation is je vais au cinema. Very important to understand. Now if I'm saying I'm going there, मैं वहां हिंदी में मैं वहां पहले आएगा ना. मैं is what? Je, okay. वहां is what? E. Going is what? मैं वहां वे. But we have a vowel. J'y vais. Simple. J'y vais. Speak up. J'y vais. Speak up. J'y vais. I'm going there. J'y vais. Simple. J'y vais. क्योंकि E is your cinema. E is your cinema. See, listen to me. I'm going to cinema. Hindi में. I'm going. English में चलो. I'm going there. Are you using cinema? I'm going to the garden. Je vais au jardin. But if you think I'm going there, I'm going there में I'm not using garden. I'm going there. There is your E. Yes. E. So I think Isha का miss हुआ है शायद ना Saturday वाला session. हाँ जी. Okay, I will explain to you, no problem. J'y vais. I'm going there. J'y vais. C'est clair. Now, il n'y a pas. There is not. Il n'y a pas. Speak up. Il n'y a pas. Speak up, please. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Beaucoup, lot of. Beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Circulation is your traffic jam. Now, embouteillage and circulation is your traffic jam. Circulation. Speak up. Circulation is your traffic. Say clair.
Now, circulation, lot of traffic. Il y a des circulations. Il y a, ok. De notre, mademoiselle, de votre quartier, Isha, de votre quartier, il y a beaucoup de circulation. C'est bien? C'est bien? C'est oui? Bien. C'est bien? Bien. C'est vrai? C'est vrai? Vrai? Oui? Il y a beaucoup de circulation à Delhi. Oh là là! Il y a tant de circulation. C'est clair. So, आप ऐसे बोलोगे, Gitani, the more you look theater, you say, il n'y a pas de circulation. C'est clair. Il n'y a pas de circulation. Vous pouvez conduire. Vous pouvez conduire sans inquiéter. Vous pouvez conduire sans speak up. Vous pouvez conduire, speak up please. Vous pouvez conduire sans inquiéter. Now we have already done this verb s'inquiéter. Vous pouvez conduire sans inquiéter. You can drive. Vous pouvez conduire without song, without worry. C'est, हम बोलते हैं ne vous inquiétez pas. Vous ne vous inquiétez pas. Je suis ici. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Speak up. Ne t'inquiète pas. Speak up. No, thank you. Ne t'inquiète pas. No, thank you. Je suis ici. Yes, C'est clair. Clair. Now, il n'y a pas de circulation. Vous pouvez conduire sans inquiéter. C'est clair. Now, See, Amutash is spelling. With the lights is spelling. Amutash. embouteillage. C'est clair. Embouteillage. C'est clair. Now. वो का तो तोंदे के ऑन तोंदे on tombe कर सकते हैं, but तो स्पेलिंग से TANT. C'est clair. Embouteillage, circulation, c'est clair. Now, so I will say, vous êtes très gentil. Speak up. Vous êtes très gentil. Speak up. Vous êtes très gentil. Gentil is your nice. I mean, you're very nice. Vous êtes très gentil. Speak up. Vous êtes très gentil. Speak up. Vous êtes très gentil. Speak up. So I will say, oh, mademoiselle, vous êtes très gentil. Merci beaucoup pour me guider. C'est gentil के बाद में L No. Gentil. Elle will not pronounce. Gentil. Merci beaucoup. Speak up. Merci beaucoup pour me guider. C'est clair. Merci beaucoup pour me guider. मतलब? Thank you for guiding me. Yes. Merci beaucoup pour me guider. Now what you will say? Dorian. Ankit, how do you spell Jonti? Gentil. देखो, GENTIL. Now, as I already explained to you, whenever we have consonant ending, that would be kata. Okay. Gentil, not gentil. No, gentil. Speak up. Gentil. I के बाद I will stop. Gentil. Say clair. I don't know, gentil मेल फीमेल दोनों के लाइक हाँ, gentil. Vous êtes très gentil. C'est clair. Ok. Vous êtes très gentil. C'est clair. Now, vous êtes merci beaucoup pour me guider. C'est clair. Now, de rien, j'aime beaucoup aider les autres. Wow. Now, Gitani will say de rien. Gitani थोड़ा सा हाव में चली गई यहाँ पे.
Really, dernier. Speak up. Dernier. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. What is j'aime beaucoup? J'aime, aimer to like. J'aime beaucoup. I like. J'aime beaucoup. Speak up. J'aime beaucoup. Aider. I like to help others. J'aime beaucoup aider les autres. Others. कोई बात नहीं. I like to help others. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Speak up. De rien. Speak up. De rien. J'aime beaucoup aider les autres. C'est clair. De rien. Je vous en prie. कोई बात नहीं. De rien. Not mention not. De rien. Je vous en prie. Ria is nothing. Ria is nothing. De rien is not mention not. Nothing. Nothing. You can say merci beaucoup. You can say je vous en prie. You can say je vous en prie. Je vous en prie. लिख दूं je vous en prie. Je vous en prie. Okay, I can drop this one. Je vous en prie. Speak up. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est clair. Je vous en prie. Je vous aide les autres. C'est clair. Clair. Now this will be the first theater. Soil, please come here. Je vous en prie. Je vous, non. En prie. Je vous en prie. and je vous en, you know it en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est clair. Yeah. Now telling Soil, please come in front of us. Speak the dialogues. Speak the dialogue and come here. Yes. Jubilee, come in front of the camera. That's fine, na? Chalo, so that's fine. Okay. Now speak up, please. Speak up, fatafat. Bonjour, monsieur. Speak up now. Bonjour. Bonjour, monsieur. You have to. Acha, okay, I will explain to you. Now, first dialogue would be for for Gitanjali. Speak up. Je m'appelle. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Gitanjali. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes le bienvenu. Comment je peux vous aider? vous aider? Very good. Now, Dis-moi les noms des bons magasins dans ce quartier. or either you can say quels sont. Quels sont les magasins dans ce quartier? Very good. Il y a plusieurs types de magasins dans ce quartier. Le magasin de sport, le magasin de fruits, le magasin de pâtisserie, etc. Very Il good. y a de bons magasins comme les magasins de Reebok, le magasin de Adidas, etc. Very good. Très bien. Je vous remercie pour votre aide. Pour votre aide. Merci beaucoup pour cette information. Où est les magasins de sport? Venez avec moi. Je vous conduirai au magasin de sport. Est-ce qu'il y a une bibliothèque? Oui, monsieur. La bibliothèque est très proche de notre immeuble. Il y a devant les magasins de sport. Je voudrais aussi visiter une bonne école dans ce quartier pour mon fils. Oui, l'école qui s'appelle Esquire. Est-ce qu'il y a un gymnase de notre quartier? Où est-ce qu'on peut trouver dans ce quartier? Il y a un gros gymnase, un terre de football, une piscine, etc. Parfait. Je suis très content des services. Merci mille fois. Mille fois. Mille fois. Oui, posez votre Posez. Posez. sorry. Oui, posez votre Question. question. Quels sont les moyens de transport? Ici, il y a des autobus, des métros, il y a pas beaucoup de circulation. Vous pouvez conduire sans inquiéter. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup pour me guider.
Deria. J'aime beaucoup. J'aime. What is j'aime? J'aime. 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 J'aime beaucoup aider les autres. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime J'aime beaucoup. beaucoup Aide les Aide autres. les autres. Je vous en prie. Je vous en prie, c'est clair. Now, but now you see, obviously, the more you will do practice, it will come to know the concept. C'est clair. Now, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Okay. Now, we have a second theater. फटाफट लिखते हैं second theater. Speak up because these theater programs very important. Okay, we have a second theater. Now we have a theater between the Dimple and Gitanjali. Say Claire. Now speak up. Bonjour. Speak up. Bonjour, madame. Now, for example, if you say, "I need your help," I need your help. Speak up. Bonjour, madame. Bonjour, madame. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin. Speak up. J'ai besoin. J'ai besoin. Besoin. Whenever besoin is a need, besoin. Speak up. Besoin. Whenever you are saying, you know, I need the help, please. J'ai besoin d'aide. Say Claire. J'ai besoin. Speak up. J'ai besoin d'aide. Good. Bonjour, madame. J'ai besoin d'aide. Pouvez-vous m'aider? Again, see, now listen to me. Why we are doing these type of activities? Because I just want to explain you how you will go for a question mark because there is a module of a question mark. तो सर ये मॉड्यूल उन लोग स्पीकिंग में बताएंगे कि क्वेश्चन करना है या फिर आपको क्वेश्चन करना है जूरी से आपको स्लाइड दिया जाएगा यू हैव टू रेज द क्वेश्चन इसलिए आई विल गो फॉर अ डायलॉग ऑफ द क्वेश्चन मार्क pouvez-vous m'aider c'est clair pouvez-vous vous pouvez but over here we have pouvez-vous m'aider help me c'est clair pouvez-vous m'aider me help देखो क्या होता है listen very carefully now how we can make it for m'aider now whenever pen down please whenever उसको ना think over करना whenever you go to your house you have to think over कि बना कैसे है and I will explain to you the formation pen down please whenever we have two verbs तो ध्यान very important to understand whenever नहीं समझ आएगा you please stop in between say clair vous pouvez poser la question encore whenever we have two verbs in one line, in one sentence, whenever we have two subjects in one sentence, so my first thing, I will explain to you how we can go with this. Pouvez-vous m'aider? As a beginner, it is very hard to say pouvez-vous m'aider? Why m'aider? But how I can say this? I cannot say aidez-moi. Moi is me. Because this is very base category. Say Claire. Now, whenever we have two verbs in one sentence, look here. Whenever we have two subjects in one sentence, in that case, my first verb will be conjugate. And on this, in that case, my first verb will be conjugate. In that case, my first verb will be conjugate and I rest with one subject then. If I'm using my subject over here, c'est le ajouter. I explain to you. Ajouter votre subject with your first subject. समझ आया? मैं दोबारा repeat कर रहा हूँ. Whenever you have two verbs in one place, my first verb will be conjugate. After this conjugation, I will apply my subject, then my second verb. In other words, I would say, or not to know, je vous soulignerai.
En autrement, en autrement. Speak up. En autrement. Speak up. En autrement. En autrement. In other words, en autrement, je vous soulignerai, je vous montrerai, je vous souligne, je voudrais souligner, je voudrais. What is je voudrais souligner? I would like to. Je voudrais, je voudrais souligner, I would like to highlight. My subject has to be together. My subject has to be together, but obviously, my first subject I have to go for a conjugation. Subject together, then the next one. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous is I have conjugated with my verb conjugation. Vous pouvez, pouvez-vous. C'est la question, pouvez-vous. Vous pouvez, c'est la normale, c'est la normale. C'est la vie normale, c'est la phrase normale, mais pouvez-vous, c'est la question, pouvez-vous m'aider, c'est clair. Pouvez-vous m'aider, c'est clair. Is it clear to you, m'aider? Me, m'aider, c'est clair. Pouvez-vous m'aider? Now speak after me. Bonjour madame, Bonjour, madame. j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Is it clear to you? Now, pen down, please. Now, this is a dialogue for Gitanjali. Bonjour madame, speak up. Bonjour madame, j'ai besoin d'aide. Pouvez-vous m'aider? Now you will say, bien sûr madame, bien sûr. Speak up, bien sûr madame. Bien sûr, madame. Speak up, bien sûr madame. Bien sûr, madame. C'est clair. Claire. Bien sûr madame. Of course madame. Speak up, bien sûr madame. Como je, como, okay. A very normal phrase, Isha, very important to understand. Comment je peux vous aider? Comment je peux vous aider? Comment je peux, Vous aider. how I can, je peux vous aider. If I will go for question mark, if je peux vous aider, I can help you. Comment लगा दिया very normal student. Comment je peux vous aider? If I will go for a smartness of my sentence, so como puesto, pues, como pues, je peux would be converted into pues, je. This is my question mark. Como je peux, speak up, como pues je, speak up, como pues je, vous aider. Vous aider. Now tell me what is this? Now tell me what is this? Because मैं आपको question लगाने बता रहा हूँ. Yes. I can say, for example, आपको question बनाना आ गया कि you tell me how may I help you. You say to the jury, como je peux vous aider. But as I saying this, this is como pues je vous aider. Pues c'est la phrase qui est très important, je pense que c'est la phrase qui est nécessaire pour augmenter votre niveau de français. C'est clair. Si vous voulez gagner la bonne note, if you want to score good, vous voulez gagner la bonne note, c'est la règle. Il faut que vous, see, you have to explain me. Il faut que my subjunctive. Vous pouvez, I cannot use. Vous puissiez. Has I explained to subjunctive? No, I will explain to you. Okay. Vous puissiez. आपको मैं explain करूँगा. I cannot say vous pouvez. Il faut que. Vous pouvez गलत sentence. हालांकि I'm saying it is mandated that vous pouvez, vous puissiez. C'est un subjunctive. Over वर्ब का subjunctive हम करेंगे, अभी किया नहीं है. Will do this. So this is your subjunctive. Puisse je vous aider. I will explain to subjunctive. Don't worry. I will explain to you.
Don't worry. We'll go for a subjunctive pattern also, but it's just I just want to give you the question marking in a very better way. C'est clair. Now, comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? C'est clair. We see. If I say, il faut que vous pouvez, it is must that you can. That's a wrong sentence. Why wrong sentence? It is meant that you can, vous pouvez, no. C'est le subjunctive. We'll do the subjunctive pattern. Vous pouvez see. C'est clair. Now, comment puis-je vous aider? Speak. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? C'est clair. Clair. Now, Gitandi will say, je veux des vitamines. Vitamines. Gitandi will say, je veux. Now, Gitandi dialogue. Je veux des vitamines. Speak up. Vitamines. Speak up. Je veux. हाँ, Gitandi speak up. Je veux des vitamines pour ne pas tomber malade. Pour ne pas. Pour ne pas, pardon, pour ne pas tomber malade. Tomber. Basically, literally translation of tombe is to fall down. My literally translation of tombe is to fall down. हम बोलते हैं I fall sick. It doesn't mean I गिर गया and I am sick. No. Je veux des vitamines. I want the vitamins. For example, you are a medicine. Who's it from medicine? You're a doctor. Je veux des vitamines pour ne pas, not to fall sick. Tomber. Yes. tombe ना पाके नहीं pour ne tomber pas. कर सकते हैं पर pour ne pas tomber malade. जैसे हम ऐसे करते हैं हाँ, because it's full work. Pour ne pas tomber malade. C'est clair? Clair? Now, je veux des vitamines. Speak up. Je veux des vitamines pour ne pas tomber malade cet hiver. Cet hiver. Speak up. Cet hiver. Cet hiver. Cet hiver. Speak up. Cet hiver. We have to combine this. Cet hiver. Speak up. Cet hiver. This winter. Cet hiver. Speak up. Je veux des vitamines. Speak up. Je veux pour ne pas tomber malade pour cet hiver. अभी हमने जैसे पूछा है कि pour ne tomber pas, तो वो भी करें तो that हाँ बेटर होगा फिर आपको भी फुल वर्ब नहीं यूज करेंगे हम उस केस में ना pour ne फुल वर्ब है tomber में फुल वर्ब तो हम क्या करेंगे pour I don't want to fall sick pour ne tomber pas malade but pour cannot be used and pour ne pas tomber malade we can use it. That's a normal phrase, right? Pour ne pas, that's a different thing, right? So je veux des vitamines pour ne pas tomber malade. Pour ne pas tomber malade. C'est clair? Cet hiver, this morning. Now you will say Dimple. Prenez s'il vous plaît. Speak up. Prenez s'il vous plaît. Prenez s'il vous plaît. Speak up. Prenez. Prenez. Speak up. Prenez. Please take this. Speak up. Prenez. Prenez s'il vous plaît. Speak up. Prenez. Prenez. Prendre le verbe. Je prends. Tu prends. Yes. करी हमने करा दो To take. yes Prendre is to take. yes prenez s'il vous plaît prenez s'il vous plaît. Now over here we have je veux des vitamines pour ne pas tomber malade cet hiver. Now you will say prenez s'il vous plaît. Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? Speak up. Ça fait combien? Speak up. Speak up. Ça fait combien? Speak up. Ça fait combien? Speak up. Ça fait combien? Speak up. Isha, speak up. Ça fait combien? Speak up. Ça fait combien? Speak up. Ça fait combien? How much I need to pay? Simple. बिल्कुल different. ये ça fait combien is a phrase. ça fait how much is that? बोलते हैं how much is it? How much is ça fait combien? Ça fait combien? It is not how much I need to pay. No. C'est clair. Ça fait combien? Speak up. Ça fait combien? Ça fait combien? C'est clair. How much is that? Acheté by. Ça fait combien? How much is cost me? Speak up. Ça coûte भी बोलते हैं. Ça coûte combien?
Sakut combien, कभी बोलो साफे combien, speak up, साफे combien, speak up, साफे combien, अब लोगे sing करो, quatre euros, अब लोगे 4 euro, quatre euros, speak up, quatre euros, 4, quatre euros, why? Because you from this quatre euros, say clair, now, say clair, vous comprenez? Okay. Now, je voudrais aussi acheter. Now, Kitani, speak up. Je voudrais aussi. Speak up. Je voudrais aussi acheter. Je voudrais aussi acheter un sirop. Je voudrais, I also like to buy un sirop. Je voudrais aussi acheter un sirop contre la toux. Speak up, contre la toux. टू शुद्ध आपका टू होता है कफ टू स्पीकर contre la toux speaker je voudrais aussi acheter contre la toux I also want to buy a cough syrup contre la toux से together in a word is हाँ वैसे हम उसको हम बोलते हैं ना यहाँ पे तू बोलते हैं तू is your माल आला गौश कि मेरा गला खराब है माल आला गौश लेकिन मैं बोलूं contre la toux there is a full phrase syrup of the cough syrup yeah cough syrup contre la toux a syrup contre la toux clair je voudrais समझ आना आपको finally je voudrais aussi acheter contre la toux c'est clair now you will say Dimple Pranay madam speaker Pranay madam now you will say Pranay madam anything else you will say Pranay madam anything else et avec ça avec is big but anything else और कुछ और के साथ et avec ça इसके साथ कुछ और चाहिए क्या et avec ça is your that c'est clair Pranay from the word take Pranay madam So if you end up with the question, I'm signing it. et avec ça yes et avec ça clair et avec ça anything else et avec ça c'est clair क्योंकि बहुत बड़े डायलॉग्स हैं इसको थोड़ा वो करते हैं okay now Gitani will ask because you are doctors and Gitani will ask समझ आ रहा है आपको सारा सेशन now I will say combien de fois speak up Gitani will ask combien de fois how many times fois is not your timetable fois is basically your कितनी बार fois FOIS frequency combien de fois speak up combien de fois d'average again देखो मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ d'average je devrais c'est la future बात ध्यान समझना I am just trying today कि आपको questions कैसे बनाने हैं for this reason we are doing the dialogues and the theater so that you will get your level okay what a niveau and you will come to know the question making the ratio आप बोलते हैं English में how many times do I need to take this syrup I should take this syrup something like blah 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 will I take this syrup in how many times will I take this syrup for example आप क्वेश्चन बनाना है इंग्लिश में मैं बोलूँगी I will take this syrup you will say will I take this syrup you make a question right
Clear? Yeah. Now, okay. Now, combien de fois, speak up, combien de fois, c'est clair, combien de fois devrais-je prendre ce sirop? Devrais-je prendre fulvo ce sirop? Combien de fois, how many times? Speak up, how many times? Speak up, combien de fois? Speak up, combien de fois? Speak up, combien de fois devrais-je prendre ce syrup? How many times should I take this syrup? Should I take this? Devrais-je. Say Claire. See, we have a devoir verb. Say Claire. Now, tell me the verb. Okay, let's go with this. Tell me the verb future tense. The verb future tense. The verb je devrais. Je devrais. Say Claire. Tell me Gitanli, where is my marker? Tell me na Gitanli. Huh? Q DEVRAS Q devra RAIRAS formula in N T आ जाएगा. no T आता है conditional in N devra say Claire future ending repeat after me RAI so repeat after देखते हैं कौन सी will play RAI RAS RA nous devrons c'est clair हमें एंडिंग याद रखनी है स्पीक अप RAI RAS RA je devrais tu devras il devra nous devrons vous devrez vous devrez c'est clair il devront RONT ये तो फॉर्मूला है हमारा रे रा रा स्पीक अप रे रा रा रो रे रो स्पीक अप रे रा रा रो रे रो से क्लियर सर थोड़ा साइड करो ये प्रेजेंट टेंस द का के मस्ट ये फ्यूचर शुड फ्यूचर कंडीशनल क्या कह रहे हो वेरी गुड I would must मतलब how many times I would must take this I would must have something like this तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दिख रहा है आपको ओके DEVRAIS सेना कंडीशनल बट अभी डिंपल कंफ्यूज हो जाएंगे सिर्फ हम ये नहीं करेंगे क्लियर तो स्पीक अप हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप यहाँ पे कंडीशन सिंपल फ्यूचर भी लगा सकते हो हमने कंडीशन लगा दी विल एक्सप्लेन टू यू कंडीशनल आल्सो स्पीक अप je devrais फिर जब हम पार्ट से करेंगे ना विल एक्सप्लेन टू यू अगेन ठीक है स्पीक अप je devrais tu devras il devra nous devrons vous devrez il devront devront ONT देखो फ्यूचर की एंडिंग क्या है पेंट ऑन प्लीज फ्यूचर एंडिंग लिखो यहाँ पे द एंडिंग ऑफ फ्यूचर लिखो RAS ओके अभी हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं पहले ग्रामर करते हैं ठीक है लेट्स अब यहाँ पे कुछ स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इसको एक पेज छोड़ दो आप compare the how many times do I have to write it maybe okay now we have the verb we'll do this बिल्कुल ध्यान से मेरा the verb to must speak up the verb speak up the verb now the present tense is je dois c'est clair tu dois
Say clap. Il and doit. Nous devons. Vous devez. Il and doit. Say clap. Say clap. Spelling and DOIVENT. ENT. Say clap. Clap. Now tell me the passé composé of the verb. Tell me the passé composé. You know because the verb belongs to our verb. The verb belongs to our verb. The verb is not your 14 verbs, 14 house verbs से नहीं है ना, ऐसे फैमिली से नहीं है. आपको our verb हमारी ये the verb. Tell me डिफर पता ना our. सर मैं रिकॉल कर कोई बात नहीं, आपको बताता हूँ क्या होता थोड़ा है. प्रैक्टिस नहीं करती कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I'm here. मैंने किया हुआ है बट कोई बात नहीं, आपको पता लग जाएगा सारा अभी, क्योंकि ब्रशअप ही है बस. In order to make a past tense, in order, पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है. I will send you the recording also, you can see. In order to make a past tense, in order to make a past tense, I will use two verbs. I will take the help of two verbs. What is those verbs? A verb and act. Say now there are 14 verbs. एक हमारा घर होता है, पूरा घर बनता है, मतलब 14 हाउस. हाउस वर्ब्स क्यों है? पूरा घर बनता है हमारा. घर बनाना आपको, जैसे हमने किया था घर बनाया था, एक घर बनता है कि आप एंटर कर रहे हो. सबसे पहले आप घर में क्या करते हो? पैदा होते हो आप घर के अंदर. ठीक है, चला नेचुरल समझाऊं आपको सर. नेचुरल, फिर पैदा होने के बाद आप चलना सीखते हो, घर के आप एंटर करते हो. ऑन्ट्रे, ऑन्ट्रे के बाद आप घर में घूमते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो. चला descendre get down. ठीक है, जिस आप सीढ़ियां उतरते हो. से क्लैप. फिर आप क्या करते हो? आप घर के अंदर जाते हो वनीर, घर के बाहर जाते हो आले, घर को छोड़ते हो सोती, घर को लीव करते हो पार्टी. से क्लैप. जितनी ये एक्टिविटीज हैं, these are my active verb. पूरा हट बनती है, उसमें अलग अलग हमारे मोरी. फिर आप मर जाते हो बाद में, वो भी हमारी एक्टिव वर्ब है. क्योंकि आप घर के अंदर ही मरते हो. पैदा होते हो घर में, अंदर कर, आप घर के अंदर एंटर कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, देशोंतर हो रहे हो. से क्लैप. फिर आप वनीर जा रहे हो, आले कर रहे हो, is to go. फिर आप मर जा रहे हो, मुरीद हो रहे हो. these all my एक्टिव वर्ब. उसका पूरा आपको हाउस बना के बताऊंगा. अभी एक्टिव हटा देते हैं, इसलिए रेस्ट apart from serve verbs plus 14 verbs and apart from एक हमारी रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है, सर्व वर्ब्स होती हैं. yes उसको हटा के जितने भी वर्ब्स हैं we will conjugate with our verb. Now what is the past composé, the past tense of my active verb? Sorry, what is the formula of my active verb? Oh sorry, the past tense in French language. What is the formula of past tense in French language? I have to use avoir présent, avoir present tense, c'est clair, avoir present tense, c'est clair, plus PP, participe passé, PP, speak up, PP. Pepe, speak up, Pepe. Pepe, c'est la participe passé pour votre verbe. For example, in English, we have past participle. yes, past participle. Cook, cooked. Walk, walked. Walk is my past participle. So what I will do is I will take the present verb of our verb plus Pepe. So in that case, it is just I have to learn my Pepe. If I will do the verb with the past tense, the verb Pepe is due. The verb Pepe is due.
So what I will say? J'ai dû. Say Claire. Tell me yes or no. Avoir present tense and the pepe. Say Claire. Paka. Tu as due because we are using over here the avoir. So the avoir présent. Present. Say Claire. Il elle a dû. Say Claire. Nous avons dû. Say Claire. Say Claire. 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 Okay. Vous avez dû. And il and don't say Claire. Tell me yes or no. Yes, Claire. Say Claire. Claire. Sûr. Est-ce que je peux passer la table? Puis-je passer la table? Puis-je? Puis-je? Say Claire. Say Claire. No, maybe no. Can we go with sentence making? जो मैं डायलॉग हमारा भी चल रहा था. Okay, now. How many times? Okay, combien de fois devrais-je prendre ce sirop? Is that clear to you? Yes. Is it clear to you? Say Claire. Claire. Say Claire. Claire. Now, we have next is quelle est la durée du traitement? Quelle est? Oh, sorry. Your answer should be okay. Now your answer will be miss. Prenez ce sirop. Speak up. Now this one will say prenez ce sirop. Take this syrup. Prenez ce sirop 2 fois par jour. Prenez ce sirop 2 fois par jour. Now Dimple will say, take this syrup 2 times par jour in a day. Par jour बोलते हैं, par jour. Prenez ce sirop 2 fois par jour. So this is in a day. And by per day. Per day is par jour only because we will not go for literary translation ki in a day à la jour. No, simple. Prenez ce sirop 2 fois par jour. 2 fois par jour in a day. Okay, par jour. We use in a par jour. We use in par jour. Say Claire. We will not say you know literary translation because English and French we cannot go for literary translate in this sense. Prenez ce sirop. Speak up. Prenez ce sirop 2 fois par jour. Par jour use करते हैं par jour. Par jour. Say Claire. Prenez ce sirop. Speak up. Prenez ce sirop 2 fois par jour. Une fois le matin. Speak up. Une fois. Speak up. Une fois le matin. One time in the morning. Speak up. Une fois le matin et une fois le soir. Et une fois le soir. C'est clair. Une fois le matin et une fois le soir. C'est clair. C'est clair. Now. Now Gitali will say. Now what Gitali will say? Gitali will say. Quelle est la durée du traitement? Quelle est? Speak up. Quelle est la durée? Speak up. What is the duration? Speak up. Quelle est? Speak up, please. Speak up. Quelle est la durée du traitement? Treatment. Du traitement. C'est clair. Vinay is asking, quelle est la durée of the duration of this treatment? Quelle est la durée? Is duration. Durée. Speak up. Durée. Durée is your duration. So because see, the moment will participate in lot of theater programs. You will see this is something like you on Rashid, I would say. On Rashid, what vocabulary? On Rashid, what niveau de français?
Say Claire. The moment will participate in the theater program dramatically. जब आप बहुत सारे theater program में सब करते हो, उसमें आपका level up जाता है. Because Jure is Jure, so now because the moment you will say in the theater, okay, quelle est Jure du traitement? Quelle est la durée du traitement? So उसकी जो practice कर दो अलग अलग theater programs की, obviously वो level मिलता है आपको, but yes, उसको हम practice करेंगे. Say Claire. What is the quelle est la durée du traitement? फिर आप बोलोगे prenez ce sirop pour 3 jours. Prenez, क्या बोलोगे आप बिल्कुल? Prenez ce sirop. Prenez ce sirop 3 fois. C'est clair. Prenez ce sirop. Okay, sorry. ऐसे नहीं prenez ce sirop pour 3 jours. Okay, pour 4 jours we can say. Pour c'est clair. Prenez सिरप में एपी बोल रहे हो? नहीं बोल रहे ना? सिरप में बी सारे sirop. सिरप Sirop. C'est clair. Prenez ce sirop pour 4 jours. Speak up. Prenez ce sirop pour 4 jours. Si vous ne vous sentez pas, si, if. Now very important to understand. I will explain what is this. Vous ne vous sentez pas. ये चीज आपको समझाऊंगा. Why नपा के बिन vous sentez? I will explain to you. वो ना वो सुनते Yeah, I will explain to you Abhi how it is. Si vous ne vous sentez pas mieux dans le 5 jours या dans le 4 jours, si vous ne vous sentez pas mieux is best. Mieux, speak up, mieux. Si, yes, speak up. Si vous ne vous sentez pas mieux dans le 4 jours, si vous ne vous sentez pas dans le 4 jours, pen on please. Si, prenez ce sirop pour 4 jours. Si vous ne vous sentez pas mieux dans le 4 jours, speak up please, speak up. Prenez ce sirop Hmm. 4 jours. Mhm. Si vous ne vous sentez Pas pas mieux. dans le 4 jours. Je vous conseille, very important. Je vous conseille. We have a verb conseiller. We have a verb conseiller. C'est clair. Conseiller is my verb to advise. Conseiller is my verb to advise. Si prenez ce sirop pour 4 jours, si vous ne vous sentez pas mieux dans les 4 jours, je vous conseille, speak up, je vous conseille, speak up, je vous conseille d'aller voir un médecin. D'aller voir. You go to see. D'aller voir. Speak up. Prenez ce sirop, speak up please. Prenez ce sirop pour 4 jours. Pour 4 jours. Si Vous sentez pas. pause के साथ चलना है. It's a Exactly. long Si, sentence. yes, si. Si vous ne vous sentez pas mieux dans les 4 jours, je vous conseille d'aller Voir. Yes, je vous conseille d'aller voir un médecin. Okay, may I have this first? Un médecin. Un médecin. वो क्या कह रहे हैं कि I advise you. जावो two subject together. ये वर्ब तो खाली एक ही है. जब वो कौन सही के बाद कॉमा है. I advise you. जब वो कौन सही to go to see. डाले voir. Go to see a doctor because you are a chemist. A medicine. Medicine is your and pharmacist is your chemist. Say Claire. Say pharmacist की spelling English वाली same. Claire. Okay. सकते हैं वो आपकी जगह दीप भी हो सकता है. Dale dir. Why? Sorry. ये तो सेम मतलब वो कह रहे हैं कि you have to go and see the doctor then.
D'aller vérifier, to check, d'aller voir un médecin. C'est clair? Clair, ये सेंस है हमारा लैंग्वेज का। फिर वो बोल रही है आप बोलो कि अभी हमने किया था साफे कॉम्बियम, किया था साफे कॉम्बियम, बड़ी साफे कॉम्बियम। How much is that? हमने किया था साफे कॉम्बियम, how much is that? Now combien safe combien safe combien clair. Now we'll do a different verb, different sentence. Quel est le prix? Quel est le prix? अब एक अलग, because quel est, speak up, quel est le prix? Quel est le prix? Yes, quel est, अलग अलग सेंस से आपको मैं थिएटर करवाना हूँ, अलग सेंटेंस फॉर्मेशन से। quel est le prix de ce sirop? Quel est le prix? What is the price of this sirop? Quel est le prix de ce sirop? Yes. Quel est le prix? अब गाइस पूछे कि what is the price of this syrup? आप बोलोगे कुछ भी, 11 0 2 0 कुछ भी, c'est clair, 14 0 c'est clair, It's 14 or 14. 14 0 14. c'est clair, 14 0 c'est clair. और अगर फ्री में देना हो फिर फ्री में देना हो सिर्फ फ्री में देना हो, n'a pas d'argent, n'a pas d'argent, अच्छा कुछ नहीं et n'a pas d'argent, N'est pas d'argent. n'a pas d'argent, argent money, De क्या? d'argent, il n'y a pas d'argent pour toi. ARGENT. Yes. Il n'y a pas d'argent pour toi. C'est bon? क्लास में नहीं है मेरी आज वर्ड वैसे पता There is no, il n'y a pas, there is no money. मतलब मनी ये वर्ड्स मेरे वाले वो निकाल नहीं किया था कहीं। अच्छा नहीं वैसे मुझे पता रिकॉल कर लिया सेल्फ स्टडी में। कोई बात नहीं। Il n'y a pas d'argent. I will explain to you. ठीक है? वो आएगा पूरे मैंने कोई सेट ऑफ वर्ड्स है तो नहीं गए वैसे ही कह रहा हूँ। नहीं अभी तो होना है। अभी हम उसे थिएटर्स करेंगे तो काम शुरू होगा। ये लोड ऑफ थिएटर पूरी है बुकलेट ऑफ थिएटर्स और हम इसको बहुत ज्यादा करेंगे 50 डेज में आपको पूरी बुकलेट करवानी है तभी हम टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। क्लियर? पूरी बुकलेट है थिएटर की है वो थिएटर जब आप करते रहोगे फिर हमारा लेटर राइटिंग का थिएटर है हमारा भी न्यूज एडिटर का भी कर हमारा होगा थिएटर जो न्यूज वाला है उसमें क्या होगा मैं आपको न्यूज बोल रहा हूँ यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू स्पीक अप इन फ्रंट ऑफ मी उससे आपका वो जो नहीं वो तो फ्रॉम से बनते हैं से क्लियर नाउ केवल पी 10 0 14 अरो से क्लियर फिर वो करेंगे you can pay 20 euro sorry होप तो क्या सारा 50 euro साफे कॉम्बिया और टोटल अच्छा फिर वो बोले साफे कॉम्बिया और टोटल साफे कॉम्बिया अभी तो आपने खाली एक सिरप का लिया है और भी कुछ चीजें ली है ना मेरे से पहले तो बोले साफे आपने एडवाइस भी लिया है वेरी गुड एडवाइस आर्टिस्ट क्लियर साफे कॉम्बिया आप साफे कॉम्बिया फिर से आगे साफे कॉम्बिया और टोटल इन टोटल साफे कॉम्बिया और टोटल स्पीकर साफे कॉम्बिया en total आप बोलोगे vous payez you pay payer is my verb to pay payer speaker vous payez कुछ भी 24 euros 24 euros मतलब 24. yes 24 c'est clair 24 euros c'est clair की जान ली सर जस्ट साफे कॉम्बिया की जगह फिर हम कैलेब्री हाँ और तो कार बिल्कुल c'est clair ना सर इसको कैप्चर कहना है. हाँ कैच काफ भी बोलते कई बार कैच भी बोलते हाँ, वही, काफ clear कर रहे हो. the one thing clair okay now Course. c'est clair now okay now you will say Gitanli prenez 24 euros आप क्या बोलोगे take 24 लिखो prenez prenez 24 euros 24 speak up prenez 24 euros speak up prenez 24 euros merci s'il vous plaît बोल देते हैं s'il vous plaît
Say Claire. Merci. Speak up. Merci. Mille fois. Merci 1,000 times. Mille fois pour m'aider. For help me. Bolo for help me. Bolo for help me. Speak for m'aider. Speak up pour m'aider. Speak up pour m'aider. Speak up please. Merci mille fois pour m'aider. C'est clair. Merci mille fois pour m'aider. C'est clair. Now what you will say? S'il vous plaît, veuillez. Voyez-vous, voyez-vous, you can say voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous. अभी वो कराऊंगा voyez-vous. Voyez-vous, we use letter writing. वो मैं कराऊंगा अभी voyez-vous. अभी इसमें मेरी जरूरत नहीं है, पर ठीक है, I will explain to you. अभी हम करेंगे वो पैटर्न भी, ठीक है? Okay. Now, Pranay, Venkatraman, s'il vous plaît, merci mille fois pour m'aider. So now what you will say? Dimple, de rien, ça m'a travaillé madame. C'est ma travail madame. This is my girlfriend. Speak up, de rien. De rien, speak up, de rien. De rien, c'est mon travail. This is my work. C'est mon travail. Speak up. C'est mon travail, mademoiselle. C'est mon travail, mademoiselle. या फिर madame. C'est mon travail. This is my work. C'est clair. C'est mon travail. C'est clair. So by on not from. Travail is always a masculine. C'est mon travail. C'est clair. C'est clair. C'est mon travail. C'est clair. Now we have done so far 2 theater programs. Almost we have 20 dialogues in each theater. So let's go for a practice of these things. Now, a conversation between Gitanjali and Dimple. Let's start with it. Let's start with this. Start. Bonjour, madame. Mm-hmm.